So today we are discussing about scapula bone. Okay, so how many scapula bones are there in our body? Yes, one is right sided and another is left sided. So first we learn about the anatomical position. Okay, so first, where it is located? So this is mainly located posteriorly. This region is called scapular region. Okay, behind the upper 7 ribs. So in the anatomical position, hold it like this. Okay, so here one cavity is present. So this is called glenoid cavity. Okay, so this cavity always directed laterally, means lateral side. And here another process is there. This is called coracoid process. Okay, this is always directed forward, means anteriorly. Okay, and another process is there. This is called spinous process. This is always present posteriorly. So this is the anatomical position, and this is the right sided scapular bone. Okay, so this is the glenoid cavity. This is present in lateral position. This spinous process is back side, and this coracoid process is forward. So there are many parts is there. So first we learn the surfaces. Okay, there are two surfaces there. One is costal surface or anterior surface or ventral surface. Okay, this is costal surface, and another is back side. This is called dorsal surface. Okay, so this is costal surface and this is the ventral surface. So here one spine is present, na? So this spine divided these parts, means the posterior part or so this dorsal surface is divided into two parts. One is supraspinatus fossa and another is infraspinatus fossa. Okay, so this is ventral surface or costal surface. This is dorsal surface. Okay, so here in the in the costal surface, there are big muscle is attached here. This is called supraspinatus muscle. Okay, so it is also called the supraspinatus fossa also. Okay, that's why this name is coming. The suprascapular muscle is attached here. Okay, in the back side or is dorsal surface is divided in by spinous process. This things is divided into two process, na? One is supraspinous fossa and another infraspinous fossa. Okay, so this supraspinous fossas muscle attached is supraspinatus muscle is attached here. Okay, and then below it infraspinatus muscle is attached. So this is surface, and next is the borders. There are three borders here. One is superior border. One is this is called lateral border, because here glenoid cavity laterally present. So below it this is called lateral border. Okay, and another is medial border. तो अभी सब लोग ठीक से सुन लो, क्योंकि आफ्टर द क्लास मैं सबको एक एक करके पूछूंगा. ठीक है? So in the superior border, one notch is present. Okay, this is called suprascapular notch. Here suprascapular nerve and arteries passes to this.
and here this is called lateral border. Okay, here two muscles are attached. One is teres minor muscle, this is upper 2/3, and the lower 1/3 is teres major muscle. Okay, and medial border, there one muscle, very important muscle is attached here. This is called serratus anterior muscle. Okay. सामने आ जाओ ना, सामने तो जगह है, बैग। Means this lateral border, one is teres minor, 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 major. अच्छा, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लास के बाद मैं बोल दूंगा, नोट्स लिख लेना है, मैं नोट्स लिख के लाया हूँ तुम लोगों के लिए। So now अच्छा, तुम लोगों का प्रैक्टिकल क्लास कितने बजे से था यहाँ पर? अभी कितना बज रहा है? सन्ने। अच्छा, तो फिर ठीक है, मतलब 3:30 तक यहाँ पर सब लोग आ जाना। अच्छा, अभी हम लोग ग्लैनोइड कैविटी के बारे में, ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट द ग्लैनोइड कैविटी. ओके, हियर अच्छा, ह्यूमेरस तो सब लोग ने पढ़ा है, ठीक है ना, ह्यूमेरस का क्लास तो हुआ है पहले. तो दिस ग्लैनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द ह्यूमेरस एंड फॉर्म ग्लैनोह्यूमेरल जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, ठीक है. सो अभी हम लोग there are three processes are there. Okay, one is spinous process and another is acromion process. Okay, and another is coracoid process. ठीक है, ये जो acromion process है ना, वो स्पाइनस प्रोसेस से स्टार्टिंग होके, मतलब यहाँ से जो स्पाइनस प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इसके लेटरल में एक्रोमियन प्रोसेस है, ठीक है ना. और दिस एक्रोमियन प्रोसेस हम लोग जब क्लेविकल का क्लास हुआ था, पता है ना, एक्रोमियन प्रोसेस क्लेविकल का लेटरल में आर्टिकुलेट होके एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट फॉर्म करता है, ठीक है ना. ओके, or this is the coracoid process. Okay, here two muscles are attached. One is coracobrachialis muscles and another is short head of biceps brachii muscle. Okay, और ये जो स्पाइनस प्रोसेस है, पहले बोला था मैंने, दिस स्पाइनस प्रोसेस, दिस मतलब डॉर्सल सरफेस को टू पार्ट में डिवाइड किया है. एक तो है सुप्रास्पाइनस फोसा, अनदर इज इंफ्रास्पाइनस. यहाँ पर सुप्रास्पिनेटस मसल अटैच है और बिलो इंफ्रास्पिनेटस मसल अटैच है. इसमें अभी इतना ही है, मतलब स्केपुला में इतना भी बोल पाओगे तो पास मार्क्स से ज़्यादा मार्क ही मिलेगा तुम लोग को, ठीक है ना. अभी
थोड़ा मैं बोलता हूँ, मतलब वो क्लिनिकल कोरिलेशन, ठीक है ना, क्या होता है। तो मैंने पहले बोला था, यहाँ पर जो मीडियल बॉर्डर है ना, यहाँ पर सेरेटस एंटीरियर मसल है। अगर सेरेटस एंटीरियर मसल का मतलब इंजर्ड हो जाता है या फिर पैरालिसिस हो जाता है, तो फिर हमारा जो स्केपुला है ना, ये तो बोला था मैं मीडियल बॉर्डर में है। सो मीडियल क्या होता है, हमारा जो स्केपुला है बैक साइड में मतलब प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है ना। मतलब आप लोग जब आउटस्ट्रेच करोगे ना ये हैंड को, तो ये बैक साइड से मतलब प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्केपुला, ठीक है। तो पेशेंट ऐसे आएगा, मतलब कॉम्प्लेन लेके आएगा, पेन है, और फिर मतलब आप लोग देख के समझ जाओगे जो एकदम प्रोमिनेंट है दिस साइड, ओके। और मेन है हिस्ट्री, मतलब जो भी मतलब क्लिनिकल कोरिलेशन है, मतलब धीरे धीरे आप सब लोग जान पाओगे। मतलब मेन हिस्ट्री है हमें लेना है पेशेंट का, ठीक है ना। हिस्ट्री में ऐसा आएगा, पेशेंट बोलेगा मैं वेट लिफ्टर हूँ या फिर मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, क्योंकि इससे तो हमारा दिस मसल मतलब बहुत इन्वॉल्व होता है ना, इसलिए। तो अभी इसका मतलब ट्रीटमेंट क्या होगा, मतलब ऐसे कुछ पेशेंट आए तो हमें क्या ट्रीटमेंट देना है। मेनली तो हमें जो बोलते हैं सब लोग एनाल्जेसिक देना है, जिसको पेन किलर बोलते हैं, ये तो बस देना है। इसके बाद हम फिजियोथेरापी करा सकते हैं, ठीक है। दिस बोन इज प्लेस्ड इन स्केपुलर रीजन बिहाइंड द अपर 7 ribs, behind the upper 7 ribs. अभी वो लिखो, मतलब साइड डिटर्मिनेशन एंड एनाटोमिकल पोजीशन हेडिंग। Side determination and anatomical position. The side of the scapula can be determined by the holding the scapula bone, in such a way that the glenoid cavity, 1 number point, the glenoid cavity faces laterally forward, laterally forward ही तो होगा, laterally forward and slightly upward. Two number point, the coracoid process is directed. The coracoid process is directed forward. The 3 number point, the spinous process is directed. The spinous process is directed posteriorly. So मैंने जो जो पढ़ाया वही सब लिखा है, ठीक है ना। Then now next, scapula presents two surface and 3 borders. First point is costal surface heading. Costal surface or ventral surface, same.
कोस्टल रीजन, COSTAL। यहाँ पर हमारा क्या है, कोस्टल कार्टिलेज है ना, इसलिए यहाँ से हुआ है ना। सी है COSTAL। It is also called এটা তো হেডিং, এরপর নেক্সট লিখো। It is also called subscapular fossa। Subscapular fossa। It provides attachment to the subscapularis muscle। It provides attachment to the subscapularis muscle। Then next, dorsal surface। It is divided into an upper supraspinous fossa and lower infraspinous fossa। Upper supraspinous fossa and lower infraspinous fossa by spinous process। Spinous process, this the two fossa are connected through spinoglenoid notch। So this is the spinoglenoid notch, okay, this is the spinous process and this glenoid tubercle, so this is named spinoglenoid notch। Next, borders। Superior border, 1 number। It presents suprascapular notch It presents suprascapular notch the nerve passes through this notch is suprascapular nerve and the anterior suprascapular artery। Arteries passes through this fossa is suprascapular artery।
Next is lateral border. It extends below the glenoid cavity. And provides attachment to teres minor muscle. Teres minor muscle in spelling TE and provides attachment to teres minor muscle, TERES, teres. Oh, this is the acromion process. This is the coracoid process. लास्ट क्या बोला था? teres minor muscles in upper two-third. Upper two-third. And teres major muscles in lower two-third. So lateral border में क्या हुआ? It extends below the glenoid cavity and provides attachment to the teres minor muscles in upper two-third and teres major muscle in lower two-third. Lower one-third, sorry. Then medial border. It provides attachment to serratus anterior muscle, SERRATUS, serratus anterior muscle on costal surface. Serratus anterior muscle, SERRATUS, on costal surface. The next point is three processes are there na, three processes. One is acromion process first. It projects from the lateral end of spine. Means spinous process का lateral में है ये, okay. It projects from the lateral end of the spine and it articulates with the lateral end of clavicle to form acromioclavicular joint. It projects from the lateral end of the spine and it's articulate with the lateral end of the clavicle to form acromioclavicular joint. Acromioclavicular joint. तुम लोगों का जो क्लास होता है, मतलब क्लेविकल का हुआ, ह्यूमरस का हुआ, घर जाके स्टडी करते हो ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, नहीं तो भूल जाओगे तो सब. Lateral end of clavicle and to form acromioclavicular joint. The next is coracoid process.
coracoid process. It is a small forward projection from the scapula bone. It is a small forward projection from the scapular bone. Its tip provide tip TIP provides tip TIP. Its tip provide origin to short head of biceps brachii muscle, short head of biceps muscle लिख लो. Its tip provide origin to short head of biceps muscle and coracobrachialis muscle. मतलब दो मसल का यहाँ से ओरिजिन होता है, बाइसेप्स ब्रैकी मसल का शॉर्ट हेड एंड अनदर इज कोराकोइड मींस कोराकोब्रेकियलिस मसल. ब्रेकियलिस BRACHIALIS. ब्रेकियलिस BRA. The next is spinous process. It can be felt, मतलब चल लिख लो पहले. It can be felt as a ridge on the back. है? ये तो दूर है बसले तो सुन में ना. It can be felt as a ridge on the back, means this spinous process. बैक साइड में हम फील कर सकते हैं ना. It can be felt as a ridge on the back side. ridge मतलब RID JE और GE ridge. It can be felt as a it is present on the dorsal aspect of scapula. ব্যাকের পরে তো বলছি it is present on the dorsal aspect of scapula and continues laterally as a acromion process. It is present on the dorsal aspect of scapula and continues laterally as a acromion process. सुनाई नहीं दे रहा है अभी भी. और कितना माइक लगा हुआ है इससे?
तुम लोग शांत हो जाओ, फिर तो सुनाई देगा सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ग्लेनोइड केविटी। It projects on the lateral side. It projects on the lateral side. The glenoid cavity of the scapula bone articulates with the head of the humerus bone to form the shoulder joint. The peripheral margin provides attachments to glenoidal labrum, means this side is called glenoid labrum, LABRUM. अच्छा, क्लिनिकल कोरिलेशन बताने से पहले मुझे कोई एक बताओ, दिस इज राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड स्कैपुला बोन, कौन बताएगा? नहीं ऐसे नहीं, कोई एक, दिस इज राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड स्कैपुला बोन। 3 पॉइंट्स तो मैंने लिखा है ना तुम लोगों का साइड डिटर्मिनेशन का, इससे देखो, बोलो। नहीं मुझे सिर्फ इतना बताओ पहले, ये राइट साइडेड है या फिर लेफ्ट साइडेड है? हाँ, तो इसे होल्ड कैसे करोगे? ना, ये लेफ्ट साइडेड है तो तुम, हाँ तो लेफ्ट साइडेड ऐसे होल्ड करना है, ऐसे नीचे टिप को पकड़, ठीक है ना? ओके। तुम बताओ। वो 3 पॉइंट्स मैंने लिखा है ना, वो पढ़ के ही बता दो क्या क्या है। एक तो ग्लेनोइड केविटी है, वो लेटरल में होगा, स्पाइनस प्रोसेस बैक साइड होगा और कोराकोइड प्रोसेस फॉरवर्डली होगा। इतना बताने से एग्जाम में पास। हाँ ठीक। कैसे समझा? लेफ्ट है, जिस पोजीशन पे बताया। नहीं पॉइंट्स तो बताओ। नहीं सिर्फ एक वर्ड से, एक लाइन से हो जाएगा। मतलब ग्लेनोइड केविटी ऑलवेज लेटरल में है, लेटरल से, ओके। और ये स्पाइनस प्रोसेस है ना, वो बैक साइड में है, और ये कोराकोइड प्रोसेस फ्रंट में है। इतना से हो जाएगा। और एक ऐसे होल्ड करना है, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में होल्ड करना है, ठीक है ना? दिस इज राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड।
हाँ हाँ, आज तो मंडे है ना, नेक्स्ट मंडे को इसका सब मतलब ट्यूटोरियल जैसा होगा, मतलब एक एक करके मेरे पास आएगा और मैं मार्क्स दूंगा। हाँ हाँ, स्कैपुला। और दूसरा सर का तो पता नहीं है, वो लोग भी ले सकता है। अच्छा, सब लोग थोड़ा देख लो ये वो। थोड़ा लेके मीन्स विंगिंग ऑफ स्कैपुला थोड़ा। विंगिंग ऑफ स्कैपुला मीन्स क्लिनिकल कोरिलेशन हेडिंग देके विंगिंग ऑफ स्कैपुला। विंगिंग WING विंगिंग WINGING। लिखो इसमें पैरालिसिस ऑफ ए मसल paralysis of a muscle called serratus anterior SERRATUS causes winging of scapula. Paralysis of a muscle called serratus anterior causes winging of scapula. Causes winging of scapula. Winging কি? WINGING. The medial border of the scapula become prominent. Prominent. The medial border, the medial border of the scapula become prominent on the back.
the medial border of the scapula become prominent on the backside. So, what are the causes of injury? मतलब serratus anterior muscle injury कैसे होता है? So, winged scapula, winged, winged scapula is usually damaged. अच्छा लाइन क्या लिखा है मैंने? Wing scapula is usually due to damage or impaired innervation to the serratus anterior muscle. Innervation to the serratus anterior muscle. अभी एक चीज मैंने तुम लोग को नहीं बोला, सो ये लाइन लिख लो अभी. द नर्व दैट इनर्वेट्स दिस मसल, the nerve that innervates this muscle is the long thoracic nerve. So this is the nerve to serratus anterior muscle. Okay, so the nerve that innervates this muscle is the long thoracic nerve. Public sports which are frequently associated with this nerve injury, sports frequently associated with this nerve injury are, मतलब कौन से स्पोर्ट्स में ये नर्व इंजूर होता है, ठीक है ना. एक है वेट लिफ्टिंग, बास्केटबॉल, एंड हॉकी. अभी सिम्टम्स लेको. सिम्टम्स मतलब पेशेंट क्या सिम्टम लेके आएगा तुम्हारे पास. वन इज पेन, सेकेंड इज वीकनेस एंड फेटिग. वीकनेस मतलब जिस साइड में भी होगा वो साइड वीक हो जाएगा, ठीक है ना. देन डिफॉर्मिटी ऑफ द शोल्डर. डिफॉर्मिटी का मतलब क्या है, मतलब विंग स्कैपुला मतलब क्या है, मतलब मीडियल बॉर्डर तुम आप सब लोग देख सकते हो ना, तो देखोगे कि ये ऊपर की तरफ थोड़ा उठा हुआ है, तो डिफॉर्मिटीज तो लगेगा ना. डिफॉर्मिटी है कुछ देख के लग रहा है. सो डिफॉर्मिटी ऑफ शोल्डर. फेटिक का मतलब वीकनेस ही है. मतलब देन लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन. मतलब हमारे आर्म से ना इस ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये मसल तो पैरालाइज है ना. अभी ट्रीटमेंट क्या होगा, मतलब ट्रीटमेंट पॉइंट लिखो. लिख लो. फिजियोथेरेपी लिख के इसमें लिखो, फिजियोथेरेपी हेडिंग दो.
एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज and supported the arm with sling, SLING, sling. ठीक है, फिर स्केपुला तो फिनिश। तो नेक्स्ट क्लास में मैं सब लोगों को एक एक करके मतलब भाई बच्चे से होगा, ठीक है।